Welcome to Only Wisdom. So, we are going to continue the series of HPU MA Political Science Entrance Question Paper of the 2023. अभी तक हमने किए थे 10 क्वेश्चंस और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20. So, question number 11. If all the mankind minus one were of one opinion and only one person were of contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind. Who among the following made the above statement? So there are four options: A. Thomas Hobbes, B. Jeremy Bentham, C. John Stuart Mill, and D. T.H. Green. So the right option would be C. John Stuart Mill. Question number 12. What were the causes of the decline of political theory according to David Easton? First is historicism, second is moral relativism, third is hyperfactualism, fourth is ideological reductionism, and fifth is positivism. तो डेविड ईस्टन ने किन कारणों को डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से एसोसिएट किया है, किन कारणों को वो बोलता है कि इस वजह से डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हुआ है? सो द राइट ऑप्शन इज ए 1, 2, 3 and 4. Question number 13. Classical Hindu thinkers conceptualized political life in terms of which two concepts? जो क्लासिकल हिंदू थिंकर्स है वो पॉलिटिकल लाइफ को किन दो कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं? फोर ऑप्शन आर देयर. ए इज धर्मा एंड दंडा, बी इज धर्मा एंड कर्मा, सी इज धर्मा एंड नीति, एंड डी इज कर्मा एंड नीति. सो द राइट ऑप्शन इज option A, which is dharma and danda. Question number 14. Rawls refers to his theory as justice as equality, B is justice as fairness, C justice as liberty, and D none of the above. तो जॉन रॉल्स जो है जब वो अपनी थियोरी ऑफ जस्टिस की बात करते हैं तो अपनी थियोरी को क्या बोलते हैं? सो द राइट ऑप्शन इज बी, जस्टिस एज फेयरनेस. Question number 15. The only freedom which deserves the same is that of pursuing our own good in our own way, so long as we do not attempt to deprive others of their or impede their efforts to obtain it. Who among the following made the above statement? Four options are here. Immanuel Kant, Isaiah Berlin, C is Rousseau, and D is John Stuart Mill. And the right option is D, John Stuart Mill. Question number 16 is based on the matching. The match the following. On the left hand side, important concepts are mentioned, and on the right hand side, authors are mentioned. So you have to match these options. So if we look at the left hand side, feminist conception of justice, global justice, third is communitarian perspective on justice, and fourth is capability approach. एंड ऑथर्स या सपोर्टर्स जो है इस आइडिया के: माइकल वॉल्जर, सुजैन मॉलर ओकिन, अमर्त्य सेन, थॉमस पोगे. सो इफ वी मैच दीज ऑप्शंस, हम यहाँ पे क्या देखते हैं? जो फेमिनिस्ट कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है, फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, दैट इज एसोसिएटेड विद द सुजैन मॉलर ओकिन. अगर हम जस्टिस के ऊपर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करें तो सुजैन मॉलर ओकिन is one of the key thinker of feminist concept of the justice. So first is associated with the second. Global justice, इसकी बात कौन करते हैं? इसकी बात करते हैं थॉमस पोगे. That is fourth option. Communitarian perspective on justice, that is first, Michael Walzer. And capability approach, it is associated with the Amartya Sen. If you know two options, you can easily eliminate this and solve it. So the right option is D. Then question number 17. You cannot build anything on the foundation of caste. You cannot build up a nation. You cannot build up a morality. Anything you build on the foundations of caste will crack and will never be whole. Who made the above statement? ये statement है कि आप कास्ट की फाउंडेशन पे कुछ भी नहीं बना सकते हो,
यू कैन नॉट बिल्ड अ नेशन, आप राष्ट्र नहीं बना सकते हो। यू कैन नॉट बिल्ड अप अ मॉरलिटी, आप नैतिकता नहीं बना सकते हो। अगर आप कास्ट की फाउंडेशन पे कुछ बनाते हो सो इट विल क्रैक, ये टूट जाएगा, एंड विल नेवर बी होल, ये कभी भी संपूर्ण नहीं होगा। हु मेड दिस स्टेटमेंट? सो देयर आर फोर की थिंकर्स, फोर ऑप्शंस। A is Jawaharlal Nehru, B is M.N. Srinivas, C is B.R. Ambedkar, and D none of the above. So the right option is C, Dr. B.R. Ambedkar. Question number 18. Who has propounded the idea of complex equality? जो idea of complex equality है वो किसने दिया? Four options are here. Will Kymlica, B is Michael Walzer, C is John Rawls, D is Harold Laski. अगर यहाँ पे हम बात करते हैं इक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में तो जॉन रॉल यहाँ पे बाहर हो जाते हैं बिकॉज ही हैज गिवन द थियरी ऑफ जस्टिस। अब यहाँ पे विल किमली का है, माइकल वॉल्जर है, हैरोल्ड लास्की है, और इसका राइट ऑप्शन है माइकल वॉल्जर। वे कम्युनिटेरियन थिंकर भी थे। क्वेश्चन नंबर 19. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द रिसोर्स इगैलिटेरियन? रिसोर्स इगैलिटेरियन इनमें से कौन सा नहीं है? A is Amartya Sen, B is John Rawls, C is Ronald Dworkin, and D is Eric Rakowski. तो अगर रिसोर्स इगैलिटेरियन की बात करें तो जो जॉन रॉल्स, ड्वॉर्किन या रैकोस्की है, ये सारे हैं रिसोर्स इगैलिटेरियन, जबकि जो अमर्त्य सेन है ही इज नॉट रिसोर्स इगैलिटेरियन। सो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 20. गांधी रोट हिंद स्वराज इन ईयर? गांधी ने हिंद स्वराज लिखी किस ईयर में लिखी? ये इज 1909, 1907, 1919, 1920। तो राइट ऑप्शन इज ए, हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 21. आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड देयर रिस्पेक्टिव कोर एलिमेंट्स। चार आइडियोलॉजीज दी गई है, चार ऑप्शंस है और उनके सामने उनके कुछ कोर एलिमेंट्स दिए गए हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। सो ए लिबरलिज्म, इसका जो कोर एलिमेंट है दैट इज टोलरेशन। इज इट राइट? या इट इज राइट। अगर बी की बात करें कंजर्वेटिज्म की, तो इसका जो कोर एलिमेंट यहाँ पे दिया गया है फ्रीडम, जो कि नहीं होता है। सोशलिज्म का ऑर्गेनिसिज्म, ये भी गलत है। एंड डी का मार्क्सिज्म, फ्री मार्केट, ये भी गलत है क्योंकि जो मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी को क्रिटिसाइज करता है। सो द राइट ऑप्शन इज ए, लिबरलिज्म, टोलरेशन। क्वेश्चन नंबर 22. द व्यू ऑफ डेमोक्रेसी इज द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी इज एस्क्राइब टू। जो व्यू है डेमोक्रेसी का, जहाँ पे डेमोक्रेसी को कहते हैं टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, ये किसने दिया है, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन इज जीन जैक्विस रूसो, बी एलेक्सिस डे टॉक्यूले, सी इज एडमंड बर्ग, एंड डी इज जेम्स मैडिसन। सो द राइट ऑप्शन इज बी, एलेक्सिस डी टॉक्यूले। जब वो अमेरिका में डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वो जब डेमोक्रेसी को वहाँ पे बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। द राइट ऑप्शन इज बी। Question number 23. The 11th schedule of the Indian Constitution pertaining to the powers, authorities and responsibilities of the panchayats was added by which constitutional amendment? जो 11th schedule है Indian Constitution में which is associated with the power, authorities, responsibility पंचायत की, वो कौन सी amendment के द्वारा जोड़ी गई थी? So option A 73rd amendment, B 42nd amendment, C 74th amendment, and D is 44th amendment. So the right option is A, 73rd amendment. Question number 24. Who among the following rejected the English parliamentary system of government and said that the English people were free during the time of election? किसने इंग्लिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को रिजेक्ट किया और कहा कि जो इंग्लिश पीपल है they are free during the time of elections? तो four option are here: Rousseau, J.S. Mill, Karl Marx, and Nietzsche. So the right option is A, Jean-Jacques Rousseau or Rousseau. Question number 25.
The statement, a liberty to follow my own will in all the things, where that here has been mistyped. This is rule. Rule prescribes not to be the subject to the inconstant, uncertain, unknown arbitrary will of another man, as freedom of nature is to be under no other restraint but the law of nature. This statement was made by, so here are four options: Thomas Hobbes, B is John Locke, C is Jean-Jacques Rousseau, and D is J.S. Mill. So the right option is John Locke, B. Question number 26. Gabriel Almond and Sidney Verba have identified three ideal types of the political cultures. Which of following is not the part of their classification? जो एलमंड एंड वर्मा है उन्होंने तीन तरह के पॉलिटिकल कल्चर दिए हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा उनकी क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं है? सो ए पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, बी सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, सी हायरार्किकल पॉलिटिकल कल्चर, and D is participant political culture. When we look at the classification of the political culture of Sidney Verba and Gabriel Almond, so they have dealt with the three types. One is parochial political culture, another one is subject political culture, and third one is participant political culture. And option C is wrong, hierarchical political culture, and this would be the answer of this question. Question number 27. Which of these theorists are associated with the neo-realist view of international relations? कि यहाँ पे कुछ एक चार थिंकर दिए गए हैं, इनमें से कौन से थिंकर न्यू रियलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन से एसोसिएटेड नहीं है? सो फर्स्ट इज केनेथ वॉल्स, बी इज जॉन मीरशीमर, सी इज ई एच कार, एंड फोर्थ इज फरीद जकारिया. ऑप्शन जो है कोड्स है 1 and 2, बी इज ओनली 1, सी इज 2 and 4, and D is 3 and 1. So the right option of this question is A, 1 and 2. Kenneth Wall and John Mearsheimer, who have given their own version of the neo-realism. One gives the idea of defensive realism and another gives the idea of offensive realism. Question number 28. This is again the matching question. On the left hand side, author's name has been mentioned. राइट हैंड साइड पे बुक्स का नाम दिया गया है. तो पहला ऑथर की अगर बात करें, पहला है मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट, सेकंड इज बेटी फ्रीडेन, थर्ड इज कैरोल पेटमैन, एंड फोर्थ इज J.S. मिल. और बुक्स जो इनके सामने दी गई है, द फेमिनिन मिस्टिक, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, थर्ड इज सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, एंड फोर्थ इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट. अगर हम इसको मैचिंग करने की बात करें तो J.S. मिल का ऑलमोस्ट सभी को पता होगा. यू हैव स्टडीड द J.S. मिल इन योर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज. तो J.S. मिल की बुक कौन सी है? द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन. यहाँ पे फोर्थ का है थर्ड, और वो है 3 ऑप्शन में ये चीज़ देखने को मिलती है. और दूसरा यहाँ पे कॉमन सी चीज़ मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट, इनकी है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन. विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन मतलब फर्स्ट का सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड है. और यहाँ पे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट. बेटी फ्रीडमैन का द फेमिनिन मिस्टिक, कैरोल पेटमैन का द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. वैसे आई थिंक दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो भी लिखते हैं, बट वी विल चेक इट लेटर. J.S. मिल जो फोर्थ है, उन्होंने लिखी थी द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन. क्वेश्चन नंबर 29. Who among the following requires equality to be both ambition sensitive and endeavor insensitive? नीचे 4 थिंकर के नाम दिए गए हैं. इनमें से कौन सा जो थिंकर है वो इक्वालिटी को एम्बिशन सेंसिटिव और इंडेवर इनसेंसिटिव मानता है? फर्स्ट ऑप्शन इज रोनाल्ड डवर्किन, बी इज जेरेमी बेंथम, सी इज मार्क्स, एंड डी इज थॉमस हॉब्स. तो इसका राइट ऑप्शन है ए, रोनाल्ड डवर्किन. वो राइट्स को बोलते हैं कि राइट्स आर द टर्म्स विच
need to be ambition sensitive and endeavor insensitive. Question number 30, which is the last question of today's session. Which of these is not associated with the Ambedkar? ये जो नीचे तीन चार जो पब्लिकेशंस है, ये कौन सी इनमें से अंबेडकर के साथ एसोसिएटेड नहीं है? ऑप्शन ए बहिष्कृत भारत, बी मूकनायक, सी हरिजन, डी जनता। बहिष्कृत भारत ये अंबेडकर के द्वारा अंबेडकर की है। मूकनायक इट इज अगेन एसोसिएटेड विद द अंबेडकर। हरिजन this is associated with the Mahatma Gandhi, and D Janta is associated with the Ambedkar. So the right option is C Harijan, which is not associated with the Ambedkar. So this is all for the today's session. We will be here with the more questions of this exam. Thank you. Like, share and subscribe the channel. Thank you.